Good afternoon, all. So, today we are going to learn about the gravitation, chapter 9, ninth class, and topic name is gravitation. So, we all know about the gravitation, what is meant by the gravitational force, right? Gravitational force is the force of attraction which attracts the things, right? So, first of all, we will see what we have learned before in previous chapters. So we have learned about the motion of object and force as the cause of motion. So we learn about the motion. What is meant by motion? Motion is the change in position with respect to the time, right? And for this motion, the force is very important, right? Then we have learned that force is needed to change the speed or the direction of motion of an object. देन हमने क्या पढ़ा दिस फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज द स्पीड and to change the direction of an object, right? Then we always observe that an object dropped from a height falls towards the earth. जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे मतलब ऊपर से फेंकते हैं तो वो नीचे आता है अर्थ सरफेस पे. ऐसे क्यों नहीं होता कि वो ऊपर ही चला जाए? सो देयर इज द रीजन. Then there is the another thing, that is we know that all the planets go around the sun. जैसे हमारा अर्थ प्लानेट है वैसे ही अदर प्लैनेट्स भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, राइट? एंड देन मून इज आर नेचुरल सैटेलाइट विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, राइट? सो देयर इज द फोर्स जो ऑब्जेक्ट पे, प्लैनेट्स पे एंड मून पे एग्जर्ट कर रहा है. दैट फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. As you can see here, this force is called the gravitational force. Okay, one second. This force is known as the gravitational force. So this gravitational force is invented by the Isaac Newton. Okay, who invented this Isaac Newton, right? Then we saw here what we learned in previous chapters, and now we will see what we will learn in this chapter. Okay, so to learn what we are going to learn in this chapter, we shall learn about gravitation and the universal law of gravitation. क्या क्या पढ़ने वाले हैं? ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट? ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड देन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं. देन वी शैल डिस्कस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ. जैसे मैंने आपको बोला, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम ऊपर किसी हाइट से छोड़ देते हैं तो ऊपर जाने के बजाय नीचे आता है. सो ये भी पढ़ने वाले हैं वाई इट इज हैपन्स. देन वी शैल स्टडी हाउ द वेट ऑफ अ बॉडी वैरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. Now there is the quantities, that is the mass and weight. मास इज कांस्टेंट बट वेट वैरी करता है प्लेस टू प्लेस. अगर हम अर्थ पे हैं तो हमारा वेट कुछ डिफरेंट होगा एंड हम अर्थ के बाहर चले गए तो हमारा वेट कुछ डिफरेंट होगा. देन हम और क्या पढ़ने वाले हैं? देयर आर सम कंडीशंस. किसके लिए? जो भी ऑब्जेक्ट्स लिक्विड पे फ्लोट करते हैं उनके लिए कुछ कंडीशंस होती है, वो भी हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं. सो वी विल कवर ऑल द थिंग्स इन दिस चैप्टर. Okay, now gravitation. What is gravitation? So we all know about the gravitation, right? Moon revolves around the earth because of the gravitational force. So ये gravitational force दिया किसने? ये ग्रेविटेशनल फोर्स दिया था हमारे आइजैक न्यूटन साहब ने. एक स्टोरी है इसके पीछे, जो कि आइजैक न्यूटन एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे एंड उनके सर पे जब एप्पल गिरा तो उन्होंने सोचा कि ये जो एप्पल गिरा ये ऊपर क्यों नहीं गया, ये अर्थ सरफेस पे ही क्यों आ रहा है, नीचे ही क्यों आ रहा है. एंड देन उन्होंने स्टडी की, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, कैलकुलेशंस किए एंड देन ही गेव अस के इसके पीछे एक रीज़न है, एक फोर्स है, दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड उन्होंने बताया कि सिर्फ ये ऑब्जेक्ट्स नीचे गिर रहा है तो यही
इसी पे ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट नहीं करता, तो इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सब पे ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करता है, लाइक आर अर्थ, सन, मून। नाउ देयर इज द थिंग, अभी मैंने आपको बोला कि इस होल यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सब पे ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करता है। देन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि अगर हर एक ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, देन वो एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करते? जैसे कि अगर आप और मैं ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, देन व्हाई वी डू नॉट अट्रैक्ट टू ईच अदर? ओके, so it is also depends on the mass. If we will take our mass as compared to the earth, then our mass is very negligible. We can say it's a negligible as compared to the earth. अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, एंड दैट्स वाई जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ का वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अस, एंड इसीलिए अर्थ हैव दैट एबिलिटी टू अट्रैक्ट थिंग्स टूवर्ड्स इट। बट हमें वो एबिलिटी नहीं है कि हम किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो वेरी लेस होता है। ओके, सो वी आर गोइंग टू सी हियर हाउ मून रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ। एक एक्टिविटी लेंगे हम। एक बॉय है यहाँ पे जिसने एक थ्रेड पकड़ के रखा है, एंड थ्रेड के एंड में एक स्टोन लगा हुआ है, एंड यू कैन सी हियर दिस स्टोन इज रिवॉल्व्स इन द सर्कुलर पाथ। एंड ये स्टोन जो है वो सर्कुलर पाथ में इस वजह से मूव कर पा रहा है क्योंकि वहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स मीन्स सेंटर सीकिंग, मीन्स विच फोर्स acting towards the center is known as the centripetal force. There is another force also, that is the centrifugal force. Centrifugal force में क्या होता है? जो force away from the center act होता है, that is the centrifugal force. Okay, so there is the centripetal force. This centripetal force is between the moon and earth is also. Moon is revolves around the earth because of the centripetal force. if यहाँ पे centripetal force नहीं होता, as you can see here, ओके, सो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर नहीं होता तो जो मून है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता, लाइक यू कैन सी हियर, आई विल शो यू। हियर यू कैन सी, अगर यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता, एज यू कैन सी हियर, अगर यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता तो ये जो हमारा मून है ये इस डायरेक्शन में ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता, ना कि इस सर्कुलर पाथ में। ओके, तो ये सर्कुलर पाथ में मून रिवॉल्व कर रहा है बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। अर्थ भी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सो देयर इज द रीजन, दैट इज द centripetal force, or we can say the gravitational force. It is the attracting force, right? Now we will see here, I told you that the motion of the moon around the earth is due to centripetal force, right? and अगर ये centripetal force नहीं होता तो हमारा जो moon है वो एक straight line में motion perform करता। now ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है कि अगर एप्पल पेड़ से नीचे गिर रहा है, राइट, सो क्या अर्थ ही एप्पल पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है? नहीं, बल्कि एप्पल भी अर्थ पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, बट इट्स डिपेंड्स ऑन इट्स मास, जो मैंने आपको पहले ही क्लियर करा के दिया है। वी हैव द फॉर्मूला, दैट इज द, व्हाट इज द फॉर्मूला? एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए। एज यू कैन सी हियर, फोर्स इज डिपेंड्स ऑन द मास, राइट? अगर मास ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, अगर मास कम है तो फोर्स भी कम होगा, एंड दिस एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, हियर इज गिवन एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, राइट? अगर हम ये ऐसे लिखेंगे कि अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो हम क्या लिखेंगे? एफ बाय एम इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, राइट? सो हियर यू कैन से दैट acceleration is inversely proportional to the mass and force is directly proportional to the mass। मतलब अगर मास कम तो एक्सेलरेशन ज़्यादा, मास ज़्यादा तो एक्सेलरेशन कम, या फिर हम ऐसे बोलेंगे कि फोर्स ज़्यादा
तो मास ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा, and vice versa. So that's why I told you that Earth have very big mass as compared to us, right? And that's why Earth have that ability to attract the things. हमें वो एबिलिटी नहीं है, हमें वो एबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो मास है वो वेरी स्मॉल है, तो हमारा फोर्स भी क्या होगा, वो ज़्यादा छोटा होगा, राइट? एंड हम ये देखने वाले हैं अभी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। यहाँ पर दिया हुआ है कि इन आर सोलर सिस्टम ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन बाय आर गिविंग द सेम वे। मतलब जैसे हमारा प्लैनेट ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, वैसे ही अदर प्लैनेट्स भी ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, सन भी ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। मतलब इन द होल यूनिवर्स हर एक ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द things that are very important, and now we are going to learn about the universal law of gravitation. इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखना यहाँ पर what we are going to learn now, the universal law of gravitation. Okay, so there is the statement of universal law of gravitation, that is the statement: every object in the universe attracts every other object. Every object in the universe attracts every other object with a force which is proportional to the, which is directly, वहाँ पर directly नहीं दिया है, but which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. The force is along the line joining the centers of two masses. Okay, so this is the statement. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि इन द यूनिवर्स, इन द होल यूनिवर्स, एवरी ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है विथ अ फोर्स, एक फोर्स के साथ, जो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके प्रोडक्ट ऑफ मासेस के साथ में। मासेस का क्या होगा, प्रोडक्ट, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके डिस्टेंस के साथ। ओके, एंड ये जो फोर्स होता है ये एग्जर्ट करता है फ्रॉम द सेंटर्स। मतलब आई विल शो यू, ये जो फोर्स है ये एग्जर्ट करेगा ये सेंटर से लेकर ये सेंटर तक, यहाँ से या यहाँ से एग्जर्ट नहीं करेगा। ओके, कहाँ से एग्जर्ट करेगा फोर्स, ओनली फ्रॉम द सेंटर। ओके, so there are the two masses, as you can see, this is the mass A object, and this is the object B. Okay, this is object A and B, right? So there is the distance between the two objects, that is the D. Okay, so I told you that force is directly proportional to the product of masses. यहाँ पर आपको पूरा दिया नहीं है, so I'm going to tell you that force is directly proportional to the product of masses. There is the product of masses, that is the force is directly proportional to the M and M, capital M, and okay, and the force is inversely proportional to the square of distance between them. Okay, now if we will combine this equation, then we will get M into M divided by D square. But now this is square. Okay, but we don't want this directly proportionality sign. Okay, that's why we will remove this proportionality sign from this formula. When we will remove this proportionality sign from this formula, there is a constant becomes, and that constant is G. And when we remove this directly proportionality sign, then the formula will become this formula. What is F equals to G into M, capital M into small m divided by D square, and this is the main formula. Which is the main formula? This. As you can see here, this is the main formula. Okay, F equals to G into M, capital M into small m divided by D square. Okay, now
This is the formula, and here is the mathematical expression. I told you that f is directly proportional to the m into m, right? And then f is inversely proportional to the d square, right? And then we will combine the two equations, and then we got this. Okay, and then the main formula is this. I told you that how it became. Now here is the F is gravitational force, capital G is the universal gravitational constant, and capital M is the mass of object A, small m is the mass of object B, and D is the distance between these two objects. Here is given. Okay, I'll show you. Now we will calculate the formula for G. Okay, so we have these two formulas, which as you can see here, this is one formula. Okay, so if we will calculate the formula for capital G, so this d square will go into the numerator, right? And here is the G into m into small m, right? Now we want the value for capital G. So capital G क्या आ जाएगा, equals to f into d square divided by m into capital M, and this will be the formula for capital G. Okay, G is f into d square m by m. Here is given it. We will see this. As you can see here, this is the formula for capital G. Okay, now if we will calculate the unit for this, so how we will calculate? Force is Newton, right? And d square means मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस का यूनिट इज मीटर स्क्वायर, एंड मास, मास का यूनिट क्या होता है, केजी, राइट? बट मासेस का क्या है, प्रोडक्ट है, दैट्स व्हाई वी विल राइट हियर केजी स्क्वायर, राइट? सो व्हाट इज द यूनिट फॉर कैपिटल जी? द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर. Here you can see this is the formula for the gravitational constant, and its the value is, when we calculate the value, it is very small, that you can see 6.673 into 10 to the power minus 11 Newton meter square by kg square. This is the value for capital G, and that's why as you can see that there is the power is minus 11, means you can say that if we will write this, we will write like this, 6.67 divided by 1 पे कितने जीरो आएंगे बेटा, 11 जीरो, so on. Okay, and from that we can say that the value of G is very small. Now you can see here capital G is inversely proportional to the masses. As you can see that G की वैल्यू अगर छोटी है तो अगर मास हमारे छोटे रहेंगे, मतलब मास अगर ज़्यादा रहेगा तभी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो सकता है, राइट? एज यू कैन सी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस, दैट्स व्हाई अगर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करना चाहिए तो उसके लिए मासेस का ज़्यादा होना ज़रूरी है, राइट? So we saw here what we saw about the gravitational universal law of gravitation. Then we saw the proportionality constant, that is the universal gravitational constant, and it's a unit, then it's a value, right? Then we know that there exists a force of attraction between any two objects, right? Here is something given, that is the law is universal in the sense that it is applicable to all bodies, right? क्यों हम इसे यूनिवर्सल बोलते हैं? क्योंकि ये यूनिवर्स में हर एक बॉडी पे एक्ट करता है, दैट्स व्हाई वी से इट यूनिवर्सल लॉ, वेदर द बॉडीज आर बिग और स्मॉल, वेदर दे आर सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल.
एक तो बॉडी सेलेस्टियल हो, टेरेस्ट्रियल हो या फिर बिग हो, स्मॉल हो, कोई फर्क नहीं गिरता, सब पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। दैट्स वाई हम इसे एक यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं। ओके, now what is given, universal square, right? Saying that f is inversely proportional to the square of d means, for example, that if g gets a bigger factor, so we knew that कि अगर कोई भी चीज़ है जिसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस का अगर स्क्वायर है तो डिस्टेंस स्क्वायर में हम लिख लेंगे, लाइक 6 अगर डिस्टेंस है तो उसका स्क्वायर 36 टाइम्स स्मॉलर फोर्स हो जाएगा, राइट? So this is all about the universal law of gravitation, and there are some questions. So we will see these questions in next class, and then we will go on the topic that is the importance of the universal law of gravitation. So for today it's enough. We will see the example in next class. So thank you all.